Ishupanishad, mantra para 2. Actually, in Ishupanishad, mantra 4 and 5, how many mantras are there in Ishupanishad? How many mantras are there? Hey, 20 bad students. How many mantras are there? 18 mantras are there. So mantra 4 and 5 together says about the inconceivable nature of Krishna. ये जो इनकॉन्सीवेबल असीमता भगवान का जो असीमत शक्ति है, असीमत धर्म है, असीमत गुण है, इसका बारे में लिखा है 4 and 5 में. এইটো কাৰণে মানে বাচ্চা আনিব আগিও 4 and 5 ৰ মাজত এইটো আছে অচিন্ত ভাৱটো আছে অচিন্ত মানে যেটো আমি চিন্তা কৰি নাপাও অচিন্ত beyond material knowledge. You cannot understand Krishna with any amount of your material knowledge. भगवान को समझने के लिए जड़जागतिक जो ज्ञान है ये काफी नहीं है, काफी की उसका कोई मतलब ही नहीं है. क्यों? क्योंकि भगवान है दिव्य, क्योंकि कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि कृष्णा इज spiritual. So spiritual thing can only be understood with spiritual knowledge, with spiritual understanding, with spiritual knowledge. So in sloka number 4 and 5, Krishna's inconceivable nature is explained, very nicely explained. And apparently, it looks like contradiction. Apparently, it looks like contradiction. It looks like ये जो विसंगति जैसे परस्पर विरोधी जैसा दंड जैसा लगता है, क्योंकि लिखा है भगवान दूर में भी है और बहुत दूर में भी है और एकदम पास में भी है. ये पास नहीं है, एकदम very close. So it's like a contradiction. Contradiction. What is contradiction? Contradiction means opposite, विरोधी, and which doesn't make any sense. जो कोई चीज उल्टा हो जाते हैं ना, उसका बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता है, उसका कोई मान्यता नहीं रखता है. जैसे फैट थिन, one is very fat, another is very thin, no relation. Fat is fat, thin is thin. That is called contradiction. Light, dark. When there is light, it carries a sense. When it is dark, it carries a sense. Together simultaneously they cannot exist. It is almost senseless. They are called contradiction. Very far, very near. What is the distance between Guwahati and Hajo? Then you can say very far. Then again it is very near. So it's carry no sense. So they are contradictory statements. उसको क्या बोलते हैं? परस्पर विरोधी, असंगति, विसंगति बोलते हैं. लेकिन ये जो तद्दूरे तदंती के बहुत दूर में है, अंतक में भी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं. ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैराडॉक्स. पैराडॉक्स का मतलब क्या है? हम जब ऐसे देखते हैं लगते हैं ये सब कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लगते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको थोड़ा ध्यान लगा के, मनन लगा के, परीक्षा करके देखते हैं तो इसका अंदर में एक सत्य, एक रिलेशन देखते हैं. इसको क्या बोलते हैं? नॉट कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मीन्स जब हम लोग ऐसे देखते हैं एम्पिरिकली, माने ऊपर से देखते हैं तो लगता है ये कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लगता है. लेकिन जब हमारा ज्ञान लगा के, मन लगा के, मनन बोलते हैं, मन लगा के परीक्षा करके देखते हैं, थोड़ा डीप स्टडी करके देखते हैं, तो मन में भाव होते हो उसमें तो कुछ रिलेशन निकल गया. तो ये अपोजिट नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसमें कोई सेंस है. तो पैराडॉक्स इज नॉट अपोजिट, इट सीम्स अपोजिट. लगते हैं ऐसे जैसे, लेकिन उसका अंदर में डीपर लेवल में इसमें क्या है? रिलेशन है.
So this is known as contradiction. जैसे एक पैराडॉक्स का एग्जांपल दे दूं मैं, सुन लीजिए सब ध्यान से. Least corrected people are most corrected. You repeat. सुना नहीं. Corrected people are very good. I make a statement. I'm giving the example of paradox. ये ऊपर से देखने से जैसे इसको मैं बोल लूं, सुना, listen. I say least corrected people are most corrected. What I say? Least corrected people are most corrected. You see the contradiction? Least corrected and people are most corrected. Is it not a contradiction? Contradiction. Opposite. You understand? Least corrected people are most corrected. So it's seeming, माने apparently, इसको जैसे क्या लगते हैं? This is contradiction. Least corrected, how can it be most corrected? Least corrected, most corrected. Opposite जैसे लगते हैं. लेकिन, but there is a deeper meaning. You are a teacher. You are a teacher. When we check the copies, we put less red marks, means least corrected. And that student where in whose script, in whose answer script, there are less red mark, is considered to be most corrected. Isn't it? So if I go in a deeper level, that least corrected people are most corrected carry a sense, is not nonsense. But if I say a fat man is a thin man, it's senseless. Because a fat man cannot be a thin man. That is what? Contradiction. Understand? Clear? ये opposite एक दूसरा चीज है, पैराडॉक्स एक दूसरा चीज. इन स्क्रिप्चर ये जो हम लोग का जितना स्क्रिप्ट गीता बोलो, भगवत बोलो, सत्येंद्र चरित्रामृत, हम लोग का वेद वेदांत जितना है, इसमें बहुत कुछ ऐसा कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जैसे लगते हैं, लेकिन इन डीपर सेंस दे आर कैरिंग सेंसेस. डीपर सेंस दे हैव गॉट मीनिंग. मनन करना होगा, इसको ध्यान पूर्वक सुनना होगा. कोई व्यक्ति भागवत को साथ बैठ के उसको व्याख्या सुनना होगा, व्याख्या करना होगा, अध्ययन करना होगा. एंड विदाउट दैट, जैसा सुपरफिशियली मीन्स ऊपर से जाके वो पढ़ने से कैसा लगता है, वो रिजेक्ट कर देते हैं. इसे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं. क्या लिखा है इसमें? तद दूरे तदंती के, हाँ क्या बोला है? दूर में भी बोला है, असल में भी बोला है. पागल हो जाते हैं. So in this paragraph, we have the Prabhupada give a deeper meaning of the paradox. Paradox means not contradiction. Prabhupada said it is not contradiction because contradictions are senseless. But these are not senseless. They carry sense and they are not contradiction. Seeming contradiction, apparently contradiction, appear to be contradiction, but are paradox. So हम लोग, now the point is tad dure tadanti ke. How was this possible? Tad dure tadanti ke. Actually, absolute truth has got three aspects, three manifestations. गीता पढ़ने के बाद ये समझना जरूरी है. हाँ, गीता में क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन का 3 स्तर माना जाता है. एक है ब्राह्मण रियलाइजेशन, एक है परमात्मा रियलाइजेशन, एक है भगवान रियलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज ब्राह्मण रियलाइजेशन, नेक्स्ट इज Paramatma realization, and third is Bhagavan realization. There are 3 stages of self-realization. Science of self-realization. एक book है नाम लोग का SSR, Science of Self-Realization. Please, next class on है तो मैंने घर धुनिया के. Aji, why Pallavi is not coming? Oh, Aji exam. Anyways, by तो घर थोड़े बा. তেতিয়া तो मैं और otherwise distract हो जाए ना. The Paramatma এই অকলে থাকিলে ঠিক থাকে, এই লগ পালে উৎপাত কৰে.
Sit down. So we are discussing about a paradox. Taddure tadantike. He is very far, at the same time he is too close. Krishna is very far, at the same time he is very close. Now we discuss how it is possible. How it is possible. First of all, we'd like to discuss how tadantike, tadantike. Tad means he, antike. Antike means very close. So Krishna has got three manifestations. One is Brahman realization. Next is Paramatma, Bhagavan realization. So गीता पढ़ने का बाद ये रियलाइजेशन जरूरी है होना. जो गीता को पढ़ने के बाद बोलते हैं ना कोई है, बोलते हैं ना, आगे हम लोग तो मन में भाव ही नहीं था जे कोई एक भगवान है. हाँ, कोई है, मेरा ऊपर कोई है. So that is Brahman realization. Yes, there is someone who is above me. Where is he? How is he? I do not know. I know. I do realize that there is someone who is above me. Good. That is called first realization. Brahman realization. And those people are very good people. Why you know? They always consider them to be under someone. When you are under someone, you are always safe. You are under an umbrella. And if you do not believe in anyone, do not consider anyone to be above you, forget about Krishna, above you, you are jealous, you are restless, you become proudy, you become unhumble, not humble. मेरा ऊपर कोई है ही नहीं, स्वतंत्र हो गया मैं, तो क्या होगा मेरा अवस्था? दुर्दशा बोलते हैं इसको, दुर्दशा. You are fallen soul, too fallen. बोलते हैं ना हम लोग पतित है, लिप्स से बोलते हैं, अंतर से मैं कैसे पतित हूँ? ये बोलने का बात है, बोल दिया. People will accept me like I am very patit. No. Inside he is considering, how can I be patit? It's bad. तो गीता पढ़ने का बाद वो पहला लेवल का रियलाइजेशन होना जरूरी है. Someone is there who is above me. Good. This is the first stage of realization. And वो लोग थोड़ा ध्यान से काम करते हैं. कोई तो है मेरा ऊपर, वो देख जाएगा ना. तो उन लोग क्या करते हैं ना, कोई लोग है मेरा ऊपर है, आसमान में है, वो देखेंगे. तो वो लोग दिन में अच्छा रहते हैं. ठीक है, भगवान है ना, आकाश में है, देख लेंगे हम लोग को. सूर्योदय होता है, देख लेंगे. रात में तो कोई है ही नहीं, घर का अंदर में तो कोई है ही नहीं. तो दुष्ट हो जाते हैं रात में, तामसिक हो जाते हैं रात में. बिकॉज दे रियलाइज देयर इज समवन बट दे कंसीडर इज above me somewhere, but inside how can he get in? That's the first stage of realization. Second stage of realization, you go through Gita more and more and more, you will realize Paramatma realization. Krishna is there. He is above me and he is in my heart. In my heart. So my condition is now very, very, very like checky because he can see me not inside, not outside, because he's with me. So I become more devotee. Second stage of realization. Krishna है, कहाँ पे है? Krishna is, that's called Paramatma realization. And when Krishna, somebody realizes that Krishna is next to me in my heart, very close to me, closer than the closest, because the heart is closer than the closest, then I become more humble. If somebody embraces me, hug me, tightly, you feel that, okay, he or she is hugging me, but my Krishna cannot be closer than my Krishna. Can you understand my point? कोई आदमी आके आपको थोड़ा आलिंगन किया, खूब जोर से आलिंगन किया, फिर भी आपका मन में एक भाव तो होगा ही ना, वो तो इतना क्लोज में नहीं है, कोई तो फर्क रह जाते हैं ना, उनका बीच में हम लोग का बीच में कोई तो एयर होगा ना, कुछ तो होगा. तो कृष्ण तो मेरा हाथ में है. हाउ कैन दैट पर्सन बी क्लोजर देन कृष्ण? फॉर मी कृष्ण इज क्लोजेस्ट. तदंतिके, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? तदंतिके. कृष्ण इज क्लोज टू मी, कृष्ण इज नियर टू मी, and that is given in Bhagavad Gita 15:15.
सर्वस्व अहम हृदिशनि विस्तु मत्त स्मृति ज्ञानम अपहनम स किताबत নাই 15:16 আছে তাত 15:15 আছে in 15:15 it is said sarvasya aham hridishani vistu I am present in the heart of all living entity who said Bhagavan uvasa Sri Bhagavan uvasa Bhagavan said that I am in your heart I am not hugging you I am not sitting near you you know but I am in your heart you can cheat anybody and everybody you cannot cheat yourself in English it is said you can cheat थका सके है कोई को थका दूंगा मैं प्रभु जी आप इतना देरी क्यों किया मैं घर में थोड़ा लेट किया ना बोल दिया नहीं भाई मैं आ गया ना आके थोड़ा नहाया ये करा वो किया तो आ गया ना मैं कम से कम वो चीटिंग किया लेकिन कैन आई सीट माई सेल्फ कैन आई सीट कृष्णा हाउ कैन आई ही इज विथ मी ही इज क्लोज टू मी ही इज विथ मी एंड दैट ऑल्सो ही इज ऑलवेज क्लोजेस्ट टू मी आज है कल नहीं है परसों है आज नहीं है कोई आके एम्ब्रेस करेगा आपको आलिंगन करेगा आप भी करेंगे थोड़ा बाद ही तो दूर पड़ जाएंगे ना कृष्ण इज तदंती के वो अंतर में है अभी है हर टाइम रहेगा मेरा मृत्यु का बाद भी रहेगा मृत्यु का आगे भी है सुहृदम सर्वभूतानम सुहृद इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड ड्यूरिंग थिक एंड थिन जब मेरा अच्छा दिन था वो कृष्ण मेरा पास है जो मेरा दुर्दिन है कोई नहीं रहेगा कृष्ण रहेगा तुम्हारा पास दुर्दिन में भी कृष्ण रहेगा सब लोग चला जाएगा मैं जर्मनी चला जाऊंगा फोन करने के लिए भी तकलीफ होगा कोई आदमी को पूछो प्रभु जी का फोन है मेरा पास नहीं है तब तो क्या है मैं तद दूरे हो गया कभी मैं अंतिके नहीं हो पाऊंगा लेकिन कृष्ण इज ऑलवेज दैट रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई हियर में लिखा है तद दूरे तदंती के महापुरुष माधव देव ने भी बोला है हृदिस्थित हुआ तुमी जेनो कोरा बाहा स्वामी ऋषिकेश करिबुते नय हृदिस्थित स्थित मीन्स एग्जिस्ट वेट हृदय हृदिस्थित हुआ तुमी यू आर in my resting in my heart you are resting in my that is confirmed so try to realize that Krishna is in my heart he is not outside he is not very far he is not even Brahman realization but he is Paramatma with me tadantike is clear now why tad dure means at the same time where is Krishna is in Golok Vrindavan he never leave Golok Vrindavan you know never put a single step away from Vrindavan in our Mathura Vrindavan also it is written in all scriptures Krishna never leave Vrindavan सुना है कभी कृष्ण गया मथुरा लेकिन रह गया कहाँ में वृंदावन में कृष्ण गया द्वारका रह गया कहाँ मेरा हार्ट आई लिव इन वृंदावन आई एम गोइंग देयर हियर बट माय हार्ट इज देयर विद द गोपीज of Vrindavan Krishna say not me and think of that Golok Vrindavan where Radharani is there Krishna never put a single step away from there he is always there now also they are always with me but is there in Brahma Samhita it is said that Panthasat Koti Sata Bachar the yogis the munis they try to realize Krishna and bound him in his heart with their yogis power Astanga Yoga yogis you know they try to keep Krishna in the heart and bound him forever but for that वे मुनि लोग जो मन का वेग में चलते हैं you cannot move in the speed of your mind you know can you with your car accelerator full throttle full car will go hardly 120 km per or 150 and there is accident after some time this muni they can move in the speed of mind with their what with their power of meditation मुनि लोग मन का वेग में चलता है पंथासत कोटि सत्त बत्सर समगम्यो भाईर तथापि मनुष्य मुनि
इस मुनि लोग ने इतना चूर के छलने के बाद भी किसको मिलने के लिए? भगवान को मिलने के लिए। वो कृष्ण का जो पाद पद्म है, उसका जो नखन है, नाखून का काश माने नियर भी, समीप भी आ नहीं पाए, इतना कष्ट किया। हम लोग तो दूर का बात ही है। कितना स्पीड में लगा दिया? मन का स्पीड में लगा दिया। कितना? 100 बच्चर, thousands and thousands of years they are running in the speed of mind to see Krishna and bring in their heart and bound him. लेकिन ये जो ब्रह्म संहिता ने ब्रह्मा ने बोला है, ये 5th 34 में बोला है, जो वो लोग इतना स्पीड लगा के भी कृष्ण का जो नेल है ना, तो बोलते हैं ना, नेल पॉलिश लगाता है तुम लोग, जो नेल का नजदीक भी आ नहीं सके। What to speak of going to Krishna and hug him or bound him or catch him and put him in his heart, in their heart. So इतना दूर में भगवान है, तद्दूरे, तद्दूरे. If here is art, sun is about 9 kuti, 9 crores miles away from us. Miles, I'm not telling kilometer, mile is little far. 9 koti, 9 crores away from us. That is sun position. Here is art, there is sun. And above the sun, there are so many things. Then Saitya Loka, you know about Saitya Loka, Ghur Loka, Bhava Loka, Jana Loka, Tapa Loka, Mahar Loka, Saitya Loka. The Saitya Loka is 187 crores miles away from sun, not from us. Here is we, art. 9 koti, 9 crores above is who? Sun. And 187 crores miles away is who? Saitya Loka. Saitya Loka. Take. And after that, if you travel another 21 koti miles away, you get Vaikuntha Loka, not Goloka. Krishna's office you are getting. This is Krishna's office, you know. Lakshmi Devi is there, Narayan is there, Vishnu is there, and Krishna is not there. Your dearmost Krishna, Kanhaiya, is where? In Goloka Vrindavan. That is around 4,000 crores miles away from Vaikuntha. Taddure. Taddure. So this is given in Brahma Vaiyarta Purana. How Krishna is far, 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 far away from us. This is Krishna's, everything is infinite. When he is come closer, he is not near. He is getting to our heart. No space between you and Krishna. Tadantike. Krishna's everything is very powerful, infinite. Krishna says, when I come to you, I'll not come. I'm come to a position which is nearer than the nearest. माने ऐसा कोई हो नहीं जो इतना समीप में, इतना नियर में आ सके. That's Krishna. Infinite potency. कृष्णा बोला है मैं आ जाऊं, ठीक है, आ गया, तुम्हारा हृदय में बैठ जाऊं बेटा. तुम बोल नहीं सके जब भगवान थोड़ा और नजदीक में आ जाओ, तो नजदीक क्या, तुम्हारा ऊपर में मैं बैठ रहा हूं. भगवान बोले हृदय में बैठ रहा हूं. ठीक है ना. तदंतिके. और तद्दूरे means Krishna is in Goloka Vrindavan, which is so many crores and billions and trillions far away. Taddure, taddure. That is Krishna. And this inconceivable nature means this paradox nature can only be understood by devotee. Nahitu, by material intelligence, if I try to understand this taddure tadantike, it seems like illogical. It seems like carry no sense. And we say contradictory. We reject them. है ही नहीं बोल दिया. कोई आदमी बोलते हैं ऐसा कोई हो नहीं सकते. आदमी ने बोल दिया ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता. How it is possible? Someone is near, someone is far at the same time, simultaneously. It's not that now he is here, but after some time he is there. That you have to say that Krishna इतना दूर से जा सके, इतना दूर से आ सके. नहीं. Krishna है तुम्हारा पास, at the same time he is there. That is taddure tadantike. At what speed he is coming, that is paragraph 4. That is mantra 4. He can move, he cannot move. But now here the meaning is taddure, दूर में है,
गोलोक में है, मेरा कृष्ण वहीं में है. That I understand, that I realize he is doing his pastime with gopi, with the yogis or with the bhaktas, and tadantike is with me in my heart. If you hug me, if you embrace me, you are not closer than Krishna for me. So that is the realization of second paragraph. Right? So let us stop here. So this